Hey guys, welcome to the best। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आप कैसे ग्लूमी टोन फिल्टर लाइटरूम मोबाइल पे एडिट कर सकते हैं। तो ज्यादा देर न करके चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। First, go to light. Contrast 16. Highlights -38. Shadows 32. Whites -40. Blacks 16. Go to curve and follow these steps. उसके बाद जाइए कलर पे, टेम्परेचर 6, टिंट +6, वाइब्रेंस -8, saturation -17, go to color mix, select red, hue -8 and saturation +8. Go to orange, hue -14, saturation -26, luminance 30. Go to yellow, saturation -50, luminance -22. Go to green, hue +45, saturation -56. Go to sky color, hue -100 and saturation -34. Go to blue, hue -18. And saturation -50. And done. Now go to effects.
clarity plus 10. D has 25. Vignette minus 26. उसके बाद मिड पॉइंट -0. Go to split tone, hue to 250. Saturation 10 for highlights. And go to shadows, hue 200 and saturation 10 for shadows. एंड डन, आपका एडिट कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद इस प्रीसेट को मैं कॉपी करूंगा और बाकी फोटो में पेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है। बेसिकली मुझे ये फिल्टर बहुत ही अच्छा लगता है। रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया हूँ और आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ उसके साइड में एक बेल आइकन आता है, उसको भी क्लिक कर देना। इससे होगा कि कोई भी वीडियो छोड़ूंगा फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय।